हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं जो बिहार सिविल कोड का जो है स्टेनो और डिकम्पोजिशन कम राइटर का जो रिजल्ट आने वाला था वो कुछ रीजन से डिले हो गया है और कुछ कॉन्फिडेंशियल रीजन है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं और उसकी कुछ प्रिवेसी होती है, तो उस प्रिवेसी को मेंटेन किया जाना चाहिए। ठीक है, और मैं इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैं आप लोग के सामने उस रीज़न को ओपन नहीं रख सकता हूँ। बट हाँ, डिले हो गया है एंड आई एम सो सॉरी। मैं सर्टेन श्योर था और चूंकि इन्फॉर्मेशन ऐसा था कि हाँ रिजल्ट पक्का कंफर्म आ जाएगा, बट आज मैंने पता की कोशिश जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि कुछ रीज़न से जो है वो डिले हो गया और वो रीज़न जो है कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो खैर जो भी है, बहरहाल मैं यदि कहूँ तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है कि आपको तैयारी करने का मौका मिल गया। ठीक है, और अगली जो बात की जा रही है, ठीक है, जो न्यूज़ है कि 20-22 दिनों में, ठीक है, तो मे भी एक 1 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, तो 1 महीना मान करके चलिए। ठीक है, 1 महीना में रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि रिजल्ट हो चुका है, लेकिन कुछ रीजंस हैं, उनके रीजन है जो कॉन्फिडेंशियल रीजन है। तो आप लोग भी इस चीज़ को खैर समझ रहे होंगे और इस चीज़ को समझेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो इसलिए स्पेशल आज होने वाली है कि ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया कि जो चीज़ें थी मैंने स्पष्ट रूप से हमेशा जो है अपने चैनल में जो भी बातें रखी है स्पष्ट रूप से आप लोगों के साथ रखी है, ट्रांसपेरेंट बातें रखी हैं। ठीक है, कुछ भी हिडन बातें नहीं होती हैं। जब पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो 2-3 दिन से भी आ रहा था कि सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। लास्ट चल रहा है वीक जनवरी का, तो मैंने भी आज जानने का कोशिश किया, चूँकि आज तो लास्ट डे था और मुझे उम्मीद था कि आज आ जाना चाहिए था, तो जानने का कोशिश किया तो ये बातें निकल करके आई हैं। खैर ठीक है, उसके अलावा जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है कि इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक ट्रायल है, मैं देखता हूँ कि होप सो यदि आपको ये पसंद आएगा या आपको कैसा लगेगा वो बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और किस तरीके का इस पर रिस्पॉन्स है। क्या लाइव डिक्टेशन देना जारी रखा जाए या फिर मैं जैसे चल रहा था पिछले जिस पैटर्न पे चल रहा था, ठीक है, उस पैटर्न पे चला जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा होता है कि चेहरा नज़र आ रहा है तो लोग थोड़ा सा उनके अंदर जो एक झिझक होती है वो झिझक भी खत्म होती है। ठीक है, तो मैं आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को लेकर के मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ लाइव डिक्टेशन। लीगल डिक्टेशन है गाइस, सुप्रीम कोर्ट केसेस के द्वारा जो है लिया गया है, उसका एक्सट्रैक्ट एक पोर्शन है केस का। तो बी रेडी, 5 सेकेंड। Start. For certain reasons, the laudable settlement hoping to achieve win-win situation did not turn into reality. As per the respondent, it is the appellant who committed breach of the said settlement and also violated the directions contained in the order of the High Court to comply with these terms, as she failed to adhere to the statement and did not comply with the directions of the High Court. In this behalf, the respondent herein filed civil contempt petition in the High Court seeking execution of the consent terms and punishment to the appellant under the Contempt of Courts Act 1971 under bracket hereinafter referred to as the Act. The appellant also thereafter filed applications in the High Court seeking recall of the consent order dated 17/12/2015. The High Court has, by the impugned judgment dated 9/1/2018, found the appellant to be in contempt and awarded maximum punishment of 6 months civil imprisonment under section 12(1)
read with section 12(3) of the Act with direction to the appellant to surrender within 4 weeks. The High Court has also dismissed the application preferred by the appellant for recall of order dated 17/12/2015. However, it has not accepted the request of the respondent to give him the custody of Purnell pursuant to the Canadian Court's order dated 16/4/2015 and instead permitted the respondent to seek execution of the said order. The appellant has challenged the aforesaid order against the findings of the High Court, holding her to be in contempt of its order and awarding the said punishment. The respondent feels aggrieved by that part of the order whereby the High Court has refused to grant him the custody of Purnell and showed him the route of execution. This is nutshell in the scope of 2 appeals before this court. As noted above, Purnell was born in Baltimore, USA on 20/28/2009. He is having US citizenship. Both the parties after their marriage have raised in America or Canada. They have also become permanent residents of the Canada as well as America. From the date of his birth in August 2009, Purnell remained with his parents initially in America and thereafter in Canada till 26/7/2013 when the appellant went away with him to Buffalo, New York and thereafter came to India on 4/8/2013. Purnell stayed with his father along with his mother for 4 years and since then he is living with his mother to the exclusion of the respondent. He was 4 years of age when he was brought to India by the appellant and is in India now for more than 4.5 years. Another pertinent fact which is to be noted is that the respondent has got orders from the Canadian court to give custody of Purnell to him and has directed the appellant wherein to return the child back to Canada. In the aforesaid background, the respondent had filed petition for habeas corpus. However, the said petition was not heard on merits in as much as parties were regulated to mediation where they settled the matter leading to disposal of the habeas corpus petition wide order dated 17/12/2015 on the consent terms which were made part of the order with specific directions to both the parties to adhere to those conditions. We have already noted the consent terms as per which the parties had to withdraw their respective cases against each other within 4 months from date of the order of the High Court. The respondent was obligated to find out 3-4 flats for which of the appellant. After having chosen these flats,
he was to show the same to the appellant. The appellant at that stage was with Pranav, thereby achieving again the matrimonial alliance and Pranav having benefit of the company of both his parents. The entire process was to be completed within 18 months. During the aforesaid period of 18 months, which was given to the respondent to find out flats in USA, the respondent was permitted to come to India at least 3 times to meet the appellant and Pranav. Likewise, the appellant and Pranav were also supposed to go to USA under security, and for such visits it was the responsibility of the respondent to arrange all their expenses including travelling expenses. During such visits they were entitled to remain in USA as per their choice, and as and when they desired to return to India, the respondent had to arrange for their safe return to India. 3 main obligations as per the concerned terms were foisted upon the respondent, that is, first, to find 3 to 4 flats in USA to enable the appellant to select one of them. The chosen flat was to become abode of the family. Second, to withdraw the cases filed against the appellant. This include complaint filed with police and also take steps to ensure that warrants, red corner notice issued by the FBI Interpol also stands withdrawn. This was necessary for a smooth entry of the appellant in USA. After the selection of the flat by the appellant, the respondent was obligated to purchase the said flat in joint names. So guys, ये 862 वर्ड्स का लीगल डिक्टेशन था. होप सो आप लोग अच्छे से लिखे होंगे. एक जगह मैंने यहाँ पे चॉइस के जगह पे, ठीक है, कुछ और बोल दिया है, उसको आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. होप सो गाइज आप लोग को डिक्टेशन पसंद आ रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और डिक्टेशन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.